started, facing every photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. देखिए मैं जिससे भी पूछूंगा कि आप कौन हैं, आप बताइए आप कौन हैं, तो बोलेगा सर मैं मनोज हूँ। मनोज तुम्हारा नाम है? CSE third year student. Coding Club wishes you a very happy Engineers Day. Ladies and gentlemen, welcome to the grand inauguration of our Coding Club. We are honored to have you all here today as we embark on this exciting journey into the world of coding and technology. I would like to extend a heartfelt welcome to our distinguished guests who have graced us with their presence today. Please join us in welcoming our esteemed guest, Dr. D.T. Gole sir, Dr. V.P. Gadicha sir, Professor Akhilesh Taide sir. Please give clap for them. Before we proceed further, I want to extend our heartfelt gratitude to all the guests. We would like to present bouquet as the token of small appreciation to them. So, I would like to call upon President of Coding Club, Shivraj Kadam, to welcome our D.T. Gole sir. Please. President of Club, Aditya Bharti, to welcome Dr. V.P. Gadicha sir. Next, I would like to call upon Technical Head Prathamesh Gapne to welcome Professor Akhilesh Taide sir. Please have it, sir. What is Coding Club and what will we be doing here? So to answer that, let me introduce you to our Secretary of the Club, Arya Deshmukh, who will be providing you idea about Coding Club. Thank you. A very good afternoon everyone. I am the Secretary of Coding Club, Arya Deshmukh. I welcome you all on this inauguration program of Coding Club. It's my immense pleasure that my team found me to give introduction about Coding Club. So, first of all, we all know being a computer science engineer or even engineer, coding is very important. Obviously, we are doing coding on everyday basis journey, but still we need to improve a lot. So here we are presenting you our Coding Club. Coding Club is nothing but to practice with you, to develop us with you. So as our president says, I would like to tell that coding activity in Coding Club will be always in everyday weekly basis, and every Saturday we'll be having our Coding Club activity. We'll be having various amounts of workshops, practices, and we'll develop you guys with us for a hackathon. It's my immense pleasure that you all came here and you be here for our inauguration ceremony. Okay, thank you. Now I would like to present the Coding Club in front of you guys. So presenting the pillars of Coding Club, the President of Coding Club, Shivraj Kadam. Vice President of the club, Aditya Bharti. Secretary of the club, Arya Deshmukh. Treasurer of the club, Prathamesh Kedare.
Event Management Head Janvi Revaskar, Technical Team Head Prathamesh Dabne, Publicity Team Head Arpita Dodas. Let's have a round of applause from them guys. Coding Club is all about them and just because of them. I request all our chief guests to come forward and have a picture with our coding club members. Please, sir. I request Hajar ma'am to come forward too. Next, I am very excited to announce today's guest of honor. He is here to enlighten us with his expertise and words of wisdom. He is having 18 years of experience. He published more than 80 manuscripts in national and international journals and conferences. He got Excellent Academian Award at INFIS 2.0 in December 2020. Got the Best Research Paper Award at IEEE International Conference, and many more to say. Well, very eminent speaker, Dr. Gadisha, who is having a great experience as far as the computer, and now we are talking about coding. Professor Taide sir and Madam and faculty members and dear students. So this is really a great pleasure for me to be present among not only the engineers but the coders. I always feel that the coders are beyond the engineers because we have something additional in engineering. So that's why I suppose that the coders are the architects of the digital era, and that's why, as being we know that the digital is the now, the thing where we accept it everywhere. We cannot think any life without digital, and that's why wherever there is a digital, there is a code, and therefore my statement is that the coders are beyond the engineers. So that's why I wish this particular coder club a great success in that direction. As far as the coding is concerned, although I am not very familiar with that, but I know something about it. I know that that is not just a text, that is beyond, because the text is just simple arrangement of the word. But when that is converted into the coding, excuse me, and distributing. So when that converted into the coding, that converted text into the superpower, and that is the magic. That is what I feel, because I am not from your familiar world. So as a layman, I think that is a very great thing. I know some very super example just around us. If you start with the even the Microsoft, even the Apple also, this fellow we are only the coders. So they have started their coding, and you see the ultimate result of that. Even I could imagine certain healthcare, because one of the area of research is the health, where I could read the many things where the coders have given the really great job as far as the living is concerned. I think some of them are standing there. You can occupy this seat. Just come forward. Naturally, that is the magic. Through the coders, they could give a lot of living, lot of good living to all the human beings. For example, the cancer detection itself, the tumor detection itself, all that could be possible through your great personalities like coders. So that is the magic of the coders. Even I could see the certain examples in the NGOs also. I could see the lot of things developing through the coders also. Now let us in the Chandrayaan. I mean, before that we could not imagine, but now we could see that how they could really manage the whole thing from the Earth itself. They manage even the propelling of the rockets, even all the rovers, everything. And that could only possible through the transmission to the coders. So that's why all these things together gives the great application to all the coders.
and that's why I'm very happy. So I must congratulate Professor Gadiche as well as Professor Taide and all faculty members who have supported such a great activity in our institution, and to have the Coders Club. And because always we say that as being this is a club, so always we see that this is beyond a classroom. So just come along any foolish idea to develop. So that is not restricted to any curriculum now. Just have that, have the passion about that, and just fall in love with that. Because I know that when we are having any passion, naturally we are always thinking about that. So once we have that coding habit, I think that every time what you see, what you look, we always thinking to how to convert that into the coding that way. If I would be at your age, I wish that I could write a love letter in coding also. So that Abhishek Bachchan cannot reach. So thank you very much for great achievement of our institutions. So thank you very much. So with the permission of both of you, I would like to have one more program. So once again, I wish the best wishes for your endeavor. Thank you very much. Now, I request Gadicha sir to come forward and enlighten our student with his words of wisdom. Please, sir. Extra chairs are coming, that means forum people have done wonderful job. Can you clap for them? Thank you so much. But before I go anywhere, I personally want to congratulate Professor Taide, Shajan Madam, Umikar Madam. They came over here to supervise this session and to attend this. I also want to congratulate the entire team of this forum, which has this wonderful idea to have Coders Club into the institute. I will tell you guys that how this particular club is going to be, the most important selling point of this institute. And how come this can be urged as a center of excellence into the institute. We heard about center of excellence being the drone lab, the satellite lab and all those things, but this is something which is virtual lab. It is not visible, but then it's there into the computer system. I request everybody to settle down because this is going to be another 40 minutes and we are going to discuss. Yeah, before I switch on to this is completely technical discussion, right? So before I go to this particular technical discussion, I request everyone. मैं जब भी सेशन लेता हूँ, I will mix my session in Hindi and English. तो मैं जब सेशन लेता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि ये लिमिट और कंटिन्यूटी क्या होते हैं? लिमिट पढ़ा ना हमने? You are free to respond. सिर्फ आपको पास माइक नहीं है तो जोर से बोलना पड़ेगा. And you can interrupt me anytime. तो मैं फर्स्ट ईयर के कितने बच्चे हैं यहाँ पे? Oh, that's great. आपको फोर्सफुली तो नहीं लाया गया ना? अगर लाया भी गया है तो अब ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं आपको संभाल लूंगा. टेंशन मत लो. I can understand these days. कैसा फाइनल ईयर जो है ना वो हमेशा बिजी रहता है. किसमें बिजी रहता है? प्लेसमेंट वो तो है नहीं. ट्रेनिंग नहीं, I mean, let's be practical. ट्रेनिंग वो तो हो चुका. यूट्यूबर कौन है? Whatever. तो मैं बच्चों से बात करता हूँ कि उनसे बात नहीं करेंगे इसका. तो जब हम मैथमेटिकल मॉडलिंग सीखते हैं क्लास के अंदर तो क्या हमने उसको वापस आके लैब में एग्जीक्यूट किया? क्योंकि आप लोग दर्जनों कॉपियां भर देते हैं लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन में. कभी आपने उसको ऑटोमेट किया, कभी उसको कंप्यूटराइज किया. तो मैं जब पूछता हूँ कि लिमिट और कंटिन्यूटी क्या है तो रिस्पांस क्या है? सर हमको क्या मालूम, आप ही लोग पढ़ाते, आप ही लोग पढ़ा के चले जाते हैं, हमको क्या मालूम, हमारे ऊपर गुस्सा नहीं कर रहे. देखिए, it's your responsibility. You cannot afford to shy away from that. If some tutor is coming with some objective, you need to ask that objective whether you have accomplished that objective or not. So simple. That if somebody is saying that if there is some function exists with certain variable and its limit and its scalability is up to this particular range,
then where it get exhausted, what was the starting point, what is the journey of the variable to travel that particular range, ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होने चाहिए, तभी जाके आप उस टेक्निकल पॉइंट को, उस मैथमेटिकल पॉइंट को, उस स्टैटिस्टिकल पॉइंट को जस्टिफाई कर पाओगे। वरना हम क्लास में बैठे कोई एक आधी बुक पकड़ ली, गूगल का एक आधा आर्टिकल पकड़ लिया, एक आधा यूट्यूब देख लिया, पेपर एग्जाम का आ गया, हमने उसके अंदर उल्टी कर दिया, उल्टी करना ही हुआ ना, और उसको हमें मार्क मिल गए और हमने ढिंडोरा पीटा पूरे पड़ोस में, देखो मैं कॉलर टाइट करके घूम रहा हूँ 65%। फिर इंटरव्यू होते हैं, वो पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये तो बड़ा ही नहीं है। सो इट हैपेंस, फिर हम चिल्लाते रहते हैं सर इंजीनियरिंग को स्कोप नहीं है क्या, स्कोप हमें नहीं है, देखो यू हैव टू एक्सेप्ट इट लाइक दैट, राइट। सो यू नीड टू बी क्यूरियस। तो मैंने जैसे आपको कहा कि अगर आपको कहीं भी मुझे रोकना है तो यू कैन इंटरसेप्ट, राइट। कैसे हील करते हैं ये सीख जाए, नो, यू आर बट एक्सपेक्ट टू डेवलप सॉफ्टवेयर्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ कोडिंग इनटू इट देन कॉम्पिटिटिव कोडिंग। आजकल बड़े हैकेथॉन्स होते हैं, आइडियाथॉन्स होते हैं, क्रिएटोथॉन्स होते हैं, तो उसमें कैसे पार्टिसिपेट किया जाए और वहां पे कैसे विन हासिल की जाए, उसके लिए स्पेसिफिक बात करेंगे हम। एंड देन नीडफुल एक्शंस, स्पेशली कैंपस ड्राइव के इंटरव्यूज कैसे क्रैक किए जाएं, उसके टेक्निकल इंटरव्यूज कैसे क्रैक किए जाएं, उसके लिए क्या किया जाए, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। एंड फाइनली फ्यूचर पर्सपेक्टिव फॉर द कोडर्स लैब। तो ये जो पूरा का पूरा हमारा क्लब था, उसके ऊपर क्या रिस्पांसिबिलिटी आने वाली है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, आल्सो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। It is not those 7 people who are going to do that. Those 7 people only are representative. Actually, responsibility lies with you. You have to shoulder that. And whatever you are doing, you can just report to them so that it will be publicized in the public domain. That's it. Okay? So let me proceed now. Yeah, the slide number 1 says, what is the difference between coding and programming? Coding, programming, software, all the 3 terms are different. Let me define software for you first of all. Look at software is combination of various programs. It's a solve a real world problem definition. 3 keywords I told. Real world problem definition. अगर आपको रियल वर्ल्ड का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आप सॉफ्टवेयर लिखते हैं उसके लिए. Okay, am I making sense? But then what are these two big fishes? Programming and coding. Look, programming is a big ocean in which coding resides as one entity. Make sure about it. So if you see the difference, like if you can talk about coding, is it visible to you people? Till the end, I'll read for you, don't worry. Look, coding is something which is machine readable inputs, writing lines of codes using some language or syntax. So that is only coding, nothing more than that. But when you're talking about programming, it is constructive of the program, testing it, debugging it, deploying it, applying it into the problem, and then documenting it as well. So programming is a larger ocean instead the coding. I hope I am giving the clarity between the two. Also, I have narrated the definition of software. Fine, let's proceed. Now, what is coding? I hope now everybody is on platform. I set the platform. Now let us start. To whom we can say coding. What to code? How to code? So the thing number 1 which you need to have is problem. Are you very, very clear about the problem which is given to you? If somebody is asking you, hey, code a program in C programming or Java programming or in Python, which will calculate whether a given number is prime number or not. So this is the problem. So you should be thinking in your mind, hey, this is a mathematical oriented problem. You should synthesize that. You should absorb the density and gravity of the problem. That this problem which is served to be is a temporal computative problem. But if tomorrow Taide sir is asking you, hey,
Give me the analysis that how much rain it will be in Vidarbha next year. In 2024-25, how much it will rain in Vidarbha. So this is not a calculative problem. This is a predictive problem. Then who will predict? AI. AI will predict. And what are the prediction models? We are having 3 prediction models. We are having supervised machine learning. We are having unsupervised. We are having reinforcement machine learning. They can predict. Now they have 30 algorithms, which is the best suited algorithm. You have to choose it. So the mean to say is that whenever problem solved to you, you need to categorize in which category of that it will reside. Whether it's a computative problem, calculative problem, regressive problem, predictive problem, guessing problem, what sort of problem is served to me, so that I will go for a solution. देखिए बड़ी बारीक चीजें अब बताऊंगा यहाँ से मैं. उसके बाद जब आप कोड करने जाते हैं तो एक बार प्रॉब्लम आपने सिंथेसाइज कर ली तो दूसरी चीज का डिसीजन आपको लेना पड़ता है, वो होता है एनालिसिस. पहला कीवर्ड यूज किया था मैंने सिंथेसिस. नाउ आई एम यूजिंग एनालिसिस. थोड़ा 1 मिनट इसको मैं ब्रेक करता हूं. एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस में अटेंड कर रहा था मलेशिया में, तो मलेशियन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वहां पे बोल रहे थे. उन्होंने कहा इन एन एकेडमी इफ दे वांट टू परसीव द एक्सीलेंस there has to incubate at least 3 things in them. कम से कम 3 चीजों में उन्होंने कंडक्ट करनी चाहिए. पहली, क्रिएशन ऑफ नॉलेज. ये हो रहा है अभी. We are creating the knowledge to learn coding, right? Next, synthesis of the knowledge. कि तुमने so that we will understand कि how determined you are, how much understanding you have. And the third one is how applicable your knowledge is. जो तुमने सीखा, जो तुमने लर्न किया, जो तुमने सिंथेसाइज किया, वो कितना अप्लाई कर पाया. क्या किसी को जाके वेबसाइट बना के दे दी? क्या किसी को एक डेटाबेस क्रिएट करके दे दिया so that he will taking the leverage of his stock? He knows उसके पास क्या पड़ा हुआ है, कितना बेचा हुआ है. These 3 things when get complete, then you have excellence in the institute. And surely I am speaking, guys, this is not only going to be done from our side, you have to participate. Like you have participated today. कोडिंग का वर्कशॉप है या सेशन है और उसमें हॉल भर जाता है, ये अपने आप में गवाह है कि तुम लोग you are greedy about learning, you want to learn. I want everybody to clap for your own self. So let me proceed to the second point, which is analysis of the problem. Analysis of the problem यानी अब प्रॉब्लम का बिल्कुल चीर-फाड़ करो आप. मतलब सर ये आपने बोल तो दिया प्राइम नंबर निकालो, नंबर का नंबर तो दिया नहीं. So you need to identify कि सर ये प्रॉब्लम का इनपुट क्या है. Yeah, then network programming. Very famous nowadays. You can keep on creating website, dynamic website where you can have a dynamic content. You can keep on absorbing data, images, multimedia, etc. You can keep on writing protocols like TCP/IP, SMTP, POP, FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, DNS. इनपुट है कोई भी आर्बिट्री नंबर, कोई भी रैंडम नंबर. आउटपुट, सर आउटपुट 2 पॉसिबल होंगे, या तो आपका नंबर प्राइम होने वाला है या नहीं होने वाला है. गुड मैकेनिज्म. देखो मैं क्या कर रहा हूँ. मैकेनिज्म कैसे डिटरमाइन करोगे कि वो प्राइम है कि नहीं? सर वो फॉर्मूला है ना, आपने मैथमेटिक्स के सर ने बताया था. क्या? जो नंबर खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है वो प्राइम. समझे? और जो ये क्राइटेरिया में नहीं बैठता है वो नॉन प्राइम. सर एक बात बताऊं क्या? हाँ, सारे ऑड ही प्राइम होते हैं, इवन कोई प्राइम होता ही नहीं. ग्रेट. सो यू नो व्हाट इज इनपुट, यू नो व्हाट इज आउटपुट, यू नो व्हाट इज द मैथमेटिकल फाउंडेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ग्रेट. दिस हैज टू बी देयर. ये आप में चाहिए, और नहीं होगी तो क्या करना है मैं बताता हूँ. सर ये मेरे को नहीं पता प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, तो वो भी उसका भी सॉल्यूशन अपने पास दवाई है. आगे बढ़ते हैं. देन अब ये पता चल गया कि सर ये इनपुट कोई नंबर होने वाला है, आउटपुट प्राइम है कि नहीं ये होने वाला है, मैथमेटिकल फार्मूला पता होने वाला है. सर लेकिन ये लिखना कैसे है? सो यू नीड टू चूज अ टूल. यू नीड टू आइडेंटिफाई द सिंटैक्स.
सिमेंटिक्स, वो टूल क्या बोलता है, सी प्रोग्रामिंग बोलता है कि वॉइड मेन लिखो और सारा का सारा उसके अंदर लिख दो। जावा बोलता है नहीं जी वो क्लास बनाना पड़ेगा आपको। पाइथन बोलता है वापस से आइए आप स्क्रिप्ट लिखिए अपनी। सी प्लस प्लस बोलता है नहीं क्लास लिखना पड़ेगा, उसके अंदर मेन लिखो। सो एवरीबडी हैविंग डिफरेंट बिहेवियर अकॉर्डिंग टू देयर एप्लीकेशंस। सो यू नीड टू रिकॉग्नाइज कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन सा प्रोग्रामिंग टूल मुझे यूज करना है और उसकी यूटिलिटी कैसे बनती है। सो सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स, देखिए थोड़े भारी कीवर्ड्स मैंने यूज किए हैं, अगर आपको नहीं समझते हैं तो मुझे पूछिए। सिंटैक्स यानी क्या होता है बताओगे सबको? सिंटैक्स पानी की टंकी नहीं है। सिंटैक्स है कि ये जो कंसेप्ट है वो कैसा लिखा जाता है, और सिमेंटिक्स सर ये करता क्या है, आखिर बोलना क्या चाहते हो? That semantics tells you. Now after that you are having testing and debugging. So once you generated the code, you need to test it. सर आपका रिक्वायरमेंट क्या है? प्राइम नंबर, हाँ मैं बताता हूँ। तो you have to test and debug that. उसमें कुछ एरर्स हैं तो आपको रेक्टिफाई करने पड़ेंगे। And finally you have to apply it. You need to deploy it. When you are talking about software, they become the future ready for encountering the challenges of software industry and society at large. सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की जो लोकल ग्लोबल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकते हैं, स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट कर सकते हैं, कम्युनिटी में अगर कोई प्रॉब्लम है कंपटीशन को लेके हम सॉल्व कर सकते हैं, और कोई भी बड़ा रिसर्च प्रपोजल भी लिख सकते हैं यूजिंग सॉफ्टवेयर्स। ओके, सो ऑल दीज आर द यूटिलिटीज व्हिच आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम कोडर्स लैब। नेक्स्ट, I suspect that I at least touched the big horizon of coding over here, and I'm able to at least give a transparent picture that what sort of coding you have to go through, what is competitive programming, and what are the challenges in front of you. Thank you so much for patience listening, but now I'm suspecting more and more questions from your side. I'll be happy to entertain them all. कुछ भी पूछ सकते हो आप, सर प्रॉब्लम होता ही क्यों है? प्रोग्रामिंग में लॉजिक बिल्ड कैसे करें? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। इंसान सांस कैसे ले? देखिए आंसर सुनना है ना। मेरे को एक ही चीज से खींच होती है, मेरे बच्चे जानते हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ, जब मैं बोलता हूँ तो कोई और नहीं बोलेगा, मैं तुमको भरपूर टाइम दूंगा बोलने का तब बोलो। मैंने पूछा सर ये लॉजिक कैसे बिल्ड होता है? तो लॉजिक बिल्ड होने की मेडिकल में कोई दवाई नहीं है। हम कोई टैबलेट खा के आ जाए मैं बिल्ड करके आया हूँ लॉजिक, ऐसा नहीं हो सकता। तो लॉजिक बिल्ड होने की स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप, यू शुड नो प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम क्रैक करते हमको आना चाहिए। उसके लिए आपको मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल फाउंडेशन होना चाहिए। सर वो क्या होता है? कम से कम लिखते क्या 25 मैथमेटिकल फॉर्मूले जो कंप्यूटेशन को अप्लाई होते हैं, और 15 स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो कंप्यूटेशन को अप्लाई होते हैं। इतने 40 मेथड्स भी तुमने कर दिए ना, किसी भी कंपनी में सिलेक्ट हो जाओगे। ओके, हमको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन पता है, वी गो फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गई तो एल्गोरिथम बनाना, ये बड़ा क्रिटिकल है। जिसने एल्गोरिथम का सूडो कोड लिख दिया वो है बॉस। फिर तो क्या, कोड तो गिटहब पे पढ़ाओ या तुम मैप कर लो, लेकिन जिसको एल्गोरिथम बनाना आ गया वो है अपने क्लास का बॉस। इसीलिए एक सब्जेक्ट है तुम्हारे करिकुलम में, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। पहले बनाओ फिर एनालिसिस करके बताओ कितना टाइम खर्चा होता है, कितना स्पेस लगता है। उस सब्जेक्ट का मतलब ऐसा है। तो आपके लॉजिक्स खुद ब खुद लगेंगे once you start plotting. Any other questions? Yes. सर 60 मिनट के बारे में बताइए। देखिए वो 60 मिनट को आप कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाइए, मैथमेटिकल मॉडलिंग की तरफ जाइए, ये जो इन्वायरमेंट्स मैंने दिए उसको नेविगेट कीजिए, अलग अलग वीडियोस देखिए, NPTEL देखिए, बहुत सारी यूटिलिटीज हैं, बट टारगेट दो 60 मिनट्स को कोडिंग। ओके, नेक्स्ट।
Anybody else? Yes. You should write a program to display your name. You should develop a website to display your name. अब आप बोलोगे कि सर मुझे अगर नाम दिखाना है तो लैंग्वेज कौन सी? सी लैंग्वेज, पाइथन, जावा, एनीथिंग. Come again? From zero means basic कुछ भी नहीं पता वेबसाइट वगैरह. उसी के बारे में बता रहा हूँ मैं. अगर वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आपको एक टूल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिसका नाम पड़ता है HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. उसमें सिर्फ ये देखो कि अपना नाम एक वेबसाइट पे कैसे दिखाना है. तो 3-4 टैग दिखाता है, वो टैग टाइप कीजिए, आपका प्रोग्राम खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि वो स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज नहीं है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीस टू थिंग्स, स्क्रिप्टिंग एंड लैंग्वेज. ओके, तो हमको एक्सप्लोर करना पड़ेगा भाई, पीछे जा जाके देखना पड़ेगा. दैट इज इंपॉर्टेंट. रीच लिटरेचर पढ़ने पड़ते हैं अगर एक गट्सी प्रोग्रामर बनना है तो. ऐसा इतना आसान नहीं है. Have you heard about the name called Satoshi Nakamoto? बड़ा भयंकर आदमी था वो. 2009 में उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखी ऑन बिटकॉइंस, व्हिच इज अ वर्चुअल करेंसी. आप अगर कॉइन खरीदने जाते हो, 10,000 रुपया का आपने बिटकॉइन खरीदा, तो आपको वापसी में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? पासवर्ड. और मैंने अगर 10 रुपया का कॉइन खरीदा तो मुझे क्या मिलेगा? पासवर्ड. सर ने अगर 10 लाख रुपए का कॉइन खरीदा तो उनको क्या मिलेगा? पासवर्ड. वो आदमी बहुत खतरनाक था सर, वो बहुत ही डेंजरस आदमी है. वो किधर है? वो मिला ही नहीं आज तक. Who's he? Just imagine what he has done. कितने नोट्स होंगे बिटकॉइन में आज पता है आप लोगों को? He has made the scope of 21 billion notes और 19.5 billion notes बन चुके हैं. एक नोट भी आपने बना दिया, एक बोल रहा हूं मैं, सिर्फ एक. 19.5 बिलियन नोट्स बन चुके हैं. एक नोट आपने बना दिया तो ये कॉलेज गया, ये पूरी अमरावती का खर्चा आप उठा सकते हो. दिस इज मैजिक ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं. बड़ी बात है बॉस, मजाक नहीं है. यहाँ पे सीढ़ी नहीं बनानी है जो ऊपर जाती है और उसी से हम नीचे आ जाते हैं. ये बड़ा गंभीर विषय है. ओके, सो यू हैव टू एक्सप्लोर द थिंग्स. वो आपको बताएंगे, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन बनते हैं. एनीबडी एल्स? एनीथिंग फ्रॉम द टीम? I suspect I technically justified the topic of today's discussion, right? Thank you so much, guys. It was a privilege talking to you.